हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 24 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर जी.डी बिस्ट वॉल्यूम 1। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैडम वाइस चेयरमैन, इसको हम लिखेंगे मैडम वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन को आप वाइस चेयरमैन इकट्ठा भी लिख सकते हैं। कॉमा, आई एम एक्सट्रीमली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी that last time को इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स आप। लास्ट टाइम when this bill was discussed, comma, unfortunately को इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। unfortunately I was not here, I was not here, full stop. Next friend, however, comma, however, comma, I have gone through the, इसके साथ ही लिखेंगे the speeches which honorable members को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं honorable members, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं honorable members, इस तरीके से honorable members had made on that day, including the intervention of the minister, full stop. The home minister's intervention was highly, sorry friends, ये higher बना दी मैंने, highly disappointing, full stop, paragraph change. Now, comma, madam, comma, I wish to deal with some of the points that have been made in the course इकट्ठा लिख लेंगे of the speeches of my bill, एक साथ लिखेंगे, और bill इस तरीके से of my bill, full stop. Many of them इकट्ठा लिखेंगे, agreed that all the regional languages should find their proper place in the proceedings ऐसा है लास्ट में, of both houses इस तरीके से, was quite good, full stop. I am not saying that the present arrangement is bad, that the present arrangement is bad, full stop. What I was demanding was that there should be proper arrangements for speeches being made in all the languages, not only those enumerated, इसको बनाएंगे enumerated or listed in the 8th schedule, or listed in the
8th schedule, but members should be able to make, एक साथ लिखेंगे इसको, be able to make speeches also in their mother tongues, also in their mother tongues, even if they are not included, even if they are not included in the 8th schedule, in the 8th schedule, full stop. There need be no apprehension, there need be no apprehension, and सिर्फ apprehension है, apprehension that I am interested in ruling, that I am interested in ruling out the mother tongue which is not included, tongue which is not included in the 8th schedule, full stop, in the 8th schedule, full stop. I certainly stand for mother tongue, I certainly stand for mother tongue being permitted to be spoken here, comma, but at the same time, comma, I thought that in order, एक साथ लिखेंगे, in order at least to make the present arrangement, at least to make the present arrangement better, comma, we should provide for translation in the languages which are listed in listed को इस तरीके से लिखेंगे, listed in 8th schedule, full stop, paragraph change. Next friends आता है our friends of the opposition have taken exception to my suggestion, full stop. Sanskrit is not a modern language which people speak, full stop. This is a language in which we do not go to fight, elections or ask for vote or transact our day-to-day work in our daily life, in our को फ्रेंड्स हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं, in our daily life, full stop. I think the other languages that are mentioned in the 8th schedule, फ्रेंड्स इस तरीके से लिखेंगे हम 8th schedule सिर्फ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, 8th schedule should be taken up more seriously, taken up एक साथ भी लिख सकते हैं, more seriously, full stop. Languages of our states इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, states should not be left out, full stop. This is all that I suggested, full stop. Some members thought that I was
thought that I was denigrating, I was, यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स हम, denigrating हिंदी, फुल स्टॉप। दोज हु आर हमने इकट्ठा लिख लिया फ्रेंड्स ये पूरा। दोज हु आर अवेयर ऑफ द प्रोसीडिंग्स, अवेयर ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ओवर द पास्ट, ऑफ द हाउस एक साथ लिख लेंगे, ओवर द पास्ट इस तरीके से लिखेंगे। 2 decades और so know very well that I have always stood for Hindi being given its proper place, being given its proper place as a link language in our, इकट्ठा लिखेंगे और कंट्रीज के साथ लिख देंगे, in our country। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, in our country, ठीक है। in our country अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर इसको in our लिखेंगे अलग से और कंट्री लिखेंगे अलग से, ठीक है फ्रेंड्स। फुल स्टॉप क्लोज। सो फ्रेंड्स ये था शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज 24। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। इसमें हमने जितने भी अल्टरनेटिव आउटलाइंस बन सकती हैं या अल्टरनेटिव फ्रेजेस बन सकती हैं हमने सब सीखा है इसमें। पीडीएफ आपका इसको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या नीचे यूट्यूब के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।